ठीक है ना? यस जी, सभी को नमस्ते. आर यू गेटिंग माई साउंड? इधर आओ. द ऑडियो स्ट्रीम इज currently bit rate 0 is lower than the recommended. ये देखा आ रहा है ना? हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक नंबर 1 यूनिट नंबर 1 शुरू किया हुआ है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. ये बच्चों ये एग्ज़ाम में ये 12 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का आएगा. इस टॉपिक में मैंने बताया था आपको 3 टॉपिक हमने करने हैं. कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इनकम एंड वेलफेयर. हमने ये कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम कर लिया था विद द हेल्प ऑफ 4 डेफिनेशंस. और हम अब मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम को कर रहे हैं. वी आर ऑन दिस सेकेंड टॉपिक. दिस इज टॉपिक 1, दिस इज टॉपिक 2 एंड दिस इज टॉपिक 3. सो हम फर्स्ट टॉपिक कर चुके हैं, सेकेंड टॉपिक हम लोग कर रहे हैं. सेकेंड टॉपिक में हमने वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, 3 मेथड करने हैं.
This is the first method, this is the second method, this is the third method. लास्ट क्लास में थोड़ा सा दिक्कत चल रही थी, तो यस सर आवाज़ नहीं आ रही, वॉइस इज नॉट, बच्चों वॉइस आपको अभी भी नहीं आ रही क्या? स्टूडेंट सर वॉइस कम आ रही है क्या? अभी आपको वॉइस नहीं आ रही बच्चों? जरा फिर से देखिए, बताइए मुझे वॉइस कितनी आ रही है, कितनी नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो, हेलो, अब चेक करिए बच्चों, अब बताइए जरा मुझे, क्या वॉइस आ रही है ठीक से? नाउ आर यू गेटिंग द वॉइस? प्लीज रिप्लाई बच्चों। देखिए लास्ट क्लास में वॉइस नहीं आ रही थी, देखिए लास्ट क्लास में हमने नेशनल इनकम मेजरमेंट में इनकम मेथड में जो लिखवाया था साउंड नहीं आ रहा था, तो अब हम देखते हैं प्रोडक्शन जनरेट्स इनकम और प्रोडक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये मैंने लिखवाया था लास्ट क्लास में, नेमली लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। Income earned by production is distributed among the same 4 factors. The income earned by production is distributed among the same 4 factors of production as rent is the income of land, wages is the income of labor, interest is the income of capital and profit is the income of entrepreneur. यही तो 4 इनकम है ना। So rent, wages, interest and profit, these are the 4 incomes which is given to the 4 factors of production: land, labor, capital and entrepreneur. So when we estimate national income by income method, then we add the income of all the 4 factors of production to get national income, and we can divide these 4 factors of income into 8 parts. So there are 8 components. There are 8 components of income method. There are 8 components of income method. Namely, number 1 is the compensation of employees. We will call it COE. What is the full form of COE? COE stands for compensation of employees. The name of the second component is
mixed income, or we can say mixed income of self-employed. Mixed income of self-employed. Mixed income of self-employed. We will call it as MISE. What is MISE stand for? MISE stand for mixed income of self-employed. And the third component is rent and royalty. Third component is rent and royalty. So we will call it RR. Rent and royalty, we will call it or RR. Then the fourth component is interest. We will call it INT. INT stand for interest. Then comes distributed profit. We will call distributed profit as DP. So DP stand for distributed profit. Then come undistributed profit. Undistributed profit के लिए we will write UDP. UDP stand for undistributed profit. Then comes the next component, corporate profit tax. We will call it CPT. CPT stand for corporate profit tax, and the last is the government surplus. We will call it GS. So these are the 8 components, बच्चों. COE stand for compensation of employees. Mixed income of self-employed, second component we will write MISE. Rent and royalty is RR. Interest is INT. Distributed profit DP. Undistributed profit UDP. Corporate profit tax CPT, and government surplus GS. So these are the 8 components. When we add all the 8 components, we get NDPFC. And when we add NNPFC, if we want to estimate NNPFC, we add NDPFC plus NFIA. So आज हम इन components को explain करेंगे थोड़ा. Compensation of employees. This is COE. Compensation of employees means this is COE. Compensation of employee means all the payments given by employer to the employees. Compensation of employees means all the payment given by the employer to the employee in return of their
productive services. Compensation of employee means all the payment given by the employer to the employees in return of their productive services. Compensation of employee includes three sub-components. One A, one B and one C. One A is wages and salaries in cash. 1B is wages and salaries in kind. It means all the facilities and perks. All perks. And third is the employer contribution. Employer contribution to social security scheme. Employers contribution to social security schemes like Provident Fund, gratuity, insurance, etc. So we can say that compensation of employee is equal to wages and salaries in cash plus wages and salaries in kind plus employer's contribution to social security scheme. If we add all these three sub-components, we get compensation of employees. Note: compensation of employee does not include following. कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में ये सारे कंपोनेंट इंक्लूड नहीं होंगे. कौन कौन से बच्चों?
फर्स्ट, ट्रैवलिंग अलाउंस इंक्लूड नहीं होंगे। सेकंड, interest free loan, interest free loan given to staff, इंटरेस्ट फ्री लोन गिवन टू स्टाफ ने कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट फ्री लोन तो वापस करना है एम्प्लॉइज को। ट्रैवलिंग अलाउंस, इंटरेस्ट फ्री लोन गिवन टू स्टाफ, और एक compensation paid to injured worker, compensation paid to the injured worker by insurance company. If any compensation is paid to the injured worker by the insurance company, it is not a part of the compensation of employees, because compensation of employee means all the payments given by the employer to the employee, all the payments given by the employer to the employee. Only compensation of employees, only those payments which are given by the employer to the employee. So what are the three subcomponents of compensation of employees? Wages and salaries in cash, wages and salaries in kind, it means all the perks like dearness allowance, house rent allowances, subsidized food, uniform, etc. And the third component is employer's contribution to social security schemes like provident fund, gratuity, insurance, etc. But एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम तो इंक्लूड होता है, लेकिन इसमें कई बार कंफ्यूज करने के लिए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम दे रखा होता है। एम्प्लॉय को सैलरी मिलने के बाद एम्प्लॉय ने उसको कौन सी इंश्योरेंस लेने के लिए इस्तेमाल किया, कौन सी पेंशन स्कीम, कौन सी सोशल सिक्योरिटी लेने के लिए इस्तेमाल किया, ये सब कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट नहीं है। तो अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम दे रखा है तो उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो फोर्थ कंपोनेंट, लास्ट कंपोनेंट लिख देता हूँ, एम्प्लॉई, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर नहीं, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशंस टू social security schemes. If any employee has made some contribution in the social security schemes, that is not a part of compensation of employees. तो compensation of employees में confuse करने के लिए आपको ये सब दे रखा होगा, तो इसे include नहीं करना है। केवल उसके तीन ही component हैं, wages and salaries in cash, wages and salaries in kind, and इसे compensation in kind भी लिख सकते हैं वो, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाइक प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो ये बच्चों हमारी तीन कंपोनेंट हुए। और ध्यान रखना, क्या ध्यान ही रखना है कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग: ट्रैवलिंग अलाउंस, इंटरेस्ट फ्री लोन गिवन टू द स्टाफ, कंपेंसेशन पेड टू द इंजर्ड वर्कर बाय द इंश्योरेंस कंपनी, एंड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये सब इंक्लूड नहीं करना है। So this is all about the first component, compensation of employees. You may get a theory questions on define compensation of employee, तो आप ये सब लिख सकते हैं उसमें। Now the second component,
The name of the second component is mixed income of self-employed. Mixed income of self-employed. MISE. What is mixed income of self-employed? Mixed income of self-employed means the income earned by a self-employed person. Who is the owner of himself. Like businessman, shopkeeper, professionals, etc. Mixed income of self-employed means the income earned by a self-employed person who is the owner of himself, like businessman, shopkeeper, professionals, etc. A self-employed person contributes all the four factors of production, like land, labor, capital and entrepreneur. And he receive the combined income of all four factors. Therefore, it is called mixed income. Therefore, it is called mixed income. There is no method to break mixed income into rent, wages, interest and profit. Therefore, the concept of mixed income is important in national income.
and it is taken as separate component. You may get a question in the examination, what is mixed income of self-employed? What is its importance? Why it is taken as a separate component? So we will write a mixed income of self-employed means the income earned by a self-employed person who is the owner of himself, like businessman, shopkeeper, professionals, etc. A self-employed person contributes all the four factors of production like land, labor, capital, entrepreneur, and he receives the combined income of all the four factors. Therefore, it is called mixed income. There is no method to break the mixed income into rent, wages, interest and profit. Therefore, the concept of mixed income is important in national income and it is taken as a separate component. Is that clear? So, mixed income of self-employed. First component is compensation of employee. Second component is mixed income of self-employed. Compensation of employees के तीन component होते हैं, तीन सब component होते हैं, wages and salaries in cash, wages and salaries in kind, और employer contribution, employers contribution to social security scheme. और इसमें नोट क्या ध्यान क्या रखना है, compensation of employees COE does not include number 1 traveling allowance, number 2 सेकेंड नंबर क्या है ट्रैवलिंग अलाउंस के बाद इंटरेस्ट फ्री लोन गिवन टू द स्टाफ, नंबर थर्ड इज कंपेंसेशन पेड टू द इंजर्ड वर्कर बाय द इंश्योरेंस कंपनी, और नंबर 4 एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. अगर इनमें से कोई चार कंपोनेंट दे रखे हैं तो इनको इंक्लूड नहीं करना है वाइल एस्टिमेटिंग कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज या तो आपको सीधा दे रखा होगा या फिर इसके कंपोनेंट दे रखे होंगे. wages and salaries in cash, wages and salary in kind, and employers contribution to social security scheme. Sometimes only wages and salary is given, wages and salary and employers contribution to social security scheme. मतलब wages and salary का मतलब हो गया wages and salaries in cash as well as in kind. अगर मान लीजिए ट्रैवलिंग अलाउंस दे रखा है, साथ में employees contribution to social security scheme दे रखा है, इंटरेस्ट फ्री लोन दे रखा है, कंपेंसेशन पेड टू द इंजर्ड वर्कर बाय द इंश्योरेंस कंपनी दे रखी है, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे. नॉर्मली न्यूमेरिकल्स में कंफ्यूज करने के लिए ये सब दे रखा होता है. सेकंड कंपोनेंट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है द इनकम अर्न्ड बाय ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु इज द ओनर ऑफ हिमसेल्फ. दे डू नॉट वर्क अंडर समवन एल्स, दे आर द ओनर ऑफ देमसेल्व्स. सो ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन लाइक प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, शॉपकीपर, they contribute all the four factors of production in the production and they receive the combined income of they receive the combined income of all four factors of production. Therefore it is called mixed income of self employed, and there is no method to break the mixed income of self employed into rent, wages, interest and profit. कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं है जो बताता हूँ मुझे रेंट से इतनी इनकम हुई है, वेजेस से इतनी हुई है, इंटरेस्ट से इतनी हुई है, प्रॉफिट से इतनी हुई है, नहीं, वो टोटल इनकम बताता है. इसलिए इस कंपोनेंट, इस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड को हमें सेपरेटली लेना पड़ता है. तो ये दोनों इनकम लेबर की इनकम हुई. लेबर दो तरह के होते हैं, या तो वो एज ए एम्प्लॉय काम करेगा या वो एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड काम करेगा. अगर एज ए एम्प्लॉय काम करेगा तो उसे मिलेगा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, और अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड होकर काम करता है तो उसे मिलेगी मिक्स्ड इनकम.
तो ये लेबर की इनकम हमने डिस्कस करी। हमें 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम डिस्कस करनी है। लेबर की इनकम के 2 पार्ट हैं, लैंडलॉर्ड को मिलता है रेंट एंड रॉयल्टी, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, 3 हो गए, और 4 हमारे प्रॉफिट के पार्ट होंगे, क्योंकि इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है। तो प्राइवेट सेक्टर वर्क्स एज ए एंटरप्रेन्योर, गवर्नमेंट सेक्टर आल्सो वर्क एज ए एंटरप्रेन्योर। गवर्नमेंट सेक्टर को भी प्रॉफिट मिलता है, प्राइवेट सेक्टर को भी प्रॉफिट मिलता है, तो दोनों के प्रॉफिट को हमें ऐड करना पड़ेगा। चलिए, तो हमने अभी सिर्फ लेबर की इनकम डिस्कस करी है, आइए थर्ड कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं। रेंट एंड रॉयल्टी, इसको हम आर बोलते हैं। So rent and royalty is the return of land. Rent is the return of land, or rent is the return of your reward of or income of land. In return of its productive services. So rent is the return of land in return of its productive services. Rent is received by the landlord rent is received in cash by the landlord. Rent also includes imputed rent of owner occupied houses. Imputed rent is estimated by imputed method. Means market value. Royalty is received in percentage royalty is received in percentage from lease contract of land underground resources like coal mines,
mineral mines, etc., or from copyrights, patent rights, etc. जैसे मान लीजिए आजकल गांव से लोग शहर में आ गए हैं और गांव में उनकी ज़मीन पड़ी है, तो वो उसको लीज पे दे देते हैं, भाई आप इसे इस्तेमाल कीजिए और जितना भी आपको इनकम हो उसका 60%, 50% हमें दे दीजिएगा, 50% हमें दे दीजिए, 50% अपने पास रखिए। इनकम कम हो तो हमें कम दीजिए, ज़्यादा हो तो ज़्यादा दीजिए। तो एक परसेंटेज फिक्स कर देते। तो रॉयल्टी इज रिसीव्ड इन परसेंटेज from lease contract of land or underground resources like coal mines, mineral mines, etc., or from copyright, patent right, etc. तो रेंट और रॉयल्टी दोनों को ऐड कर देना है। अगर रेंट और रॉयल्टी सेपरेट दे रखे हैं तो रेंट एंड रॉयल्टी को ऐड कर देना है आपको न्यूमेरिकल्स में। तो ये हमारा तीसरा कंपोनेंट कंप्लीट हुआ। पहला था कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, दूसरा है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, और तीसरा है हमारा रेंट एंड रॉयल्टी। आइए फोर्थ कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ कंपोनेंट का नाम है इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट को हम INT बोलेंगे। इंटरेस्ट इज द रिवार्ड और रिटर्न और इनकम of capital. Interest is the reward or return or income of capital in return of its productive services. कई लोग बोलते हैं कि इंटरेस्ट इज द रिवार्ड ऑफ वेटिंग, और इंटरेस्ट इज द रिवार्ड ऑफ लूजिंग विद द लिक्विडिटी ऑफ मनी। So interest is the reward of capital because capital increases the productive capacity of the business. So interest is the reward of capital. That is in return of giving the productive services of capital. In return of giving the productive services of capital, the owner of capital receives interest. Be it noted that interest does not include national debt interest. Interest does not include national debt interest, INT.
और इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट। वो हमारा INT है, ये IND है, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट। हमें INT करना है, इंटरेस्ट, IND नहीं करना है। IND स्टैंड फॉर इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट। Be it noted that interest does not include national debt interest or interest on national debt, as interest on national debt is an example of transfer payment. Interest on national debt means interest given by the government to public for national debt or public borrowings. So government sometimes take interest, government sometimes takes borrowings from the public to decrease money supply in the market nowadays, or in the past government used to take borrowings from the public so as to fight war, etc. In times of war, government may take borrowings or loan or debt from the public, but government does not use the national debt in the production process. So but it gives, government gives the interest on the national debt. So the interest is a income of the public, but it is not earned by production. So any income which is not earned by production is called transfer income, so, or transfer payment. So interest on national debt is an example of transfer income or transfer payment. Any transfer income or transfer payment is not included in the national income. Any transfer income, any transfer payment or transfer income is not included in national income. Any transfer income or transfer payment is not included in national income. So these are the this is the fourth component of income method. Any transfer income or transfer payment is not included in the national income. So we have discussed the income of labor, income of land, and income of capital. Now the last four components: distributed profit, undistributed profit, corporate profit tax, and government surplus. These are the basically income of entrepreneur. India is a mixed economy. So in the Indian economy there are two types of sectors: private sector and government sector. There is a coexistence of private sector and government sector. So private sector earns profit as well as government sector earns profit. And private sector, the profit of the private sector can be divided into three parts: distributed profit or dividend, which is given to the shareholders; undistributed profit, which is reserve and surplus or savings or retained earning of the company sector, which is not given to the shareholders, it is retained or saved by the company for investment or to meet the future uncertainties. And the third is corporate profit tax. It is that part of the profit which is given to the government as a direct tax on profit. So we will discuss all these remaining four component in the next class, and we will start numericals of income method in the next class. So thank you very much for your आज इतने रखते हैं बच्चों. थैंक यू.
हम्म